Yesterday, we were discussing about phenomenon total internal reflection. After discussion, we derived expression for critical angle for given pair of optical media. We used Snell's law of refraction to derive the relation for critical angle. Considering the case when I is equal to IC in a denser medium, R is equal to 90 in rarer medium. So when I is equal to IC, we considered R is equal to 90. And using Snell's law, we derived what is Snell's law? It gives relative refractive index of second medium with respect to first medium. So relative refractive index of second medium with respect to first medium is sin I upon sin R. Here we are considering angle of incidence in denser medium equal to IC. That time sin R is 90. So sin R sin 90 will be 1. So we get the relation sin IC is equal to mu of second medium, that is rarer medium of the pair with respect to the first medium. You know mu of second medium with respect to first medium can also be rewritten in terms of absolute refractive index of second medium to absolute refractive index of first medium. That is rarer medium out of 2 upon mu of denser medium out of 2. So we get the equation sin IC is equal to mu rarer upon mu denser when internal reflection takes place. Using this, we can find IC. If you take sine inverse on both sides, sine inverse and sine cancel each other and you get IC simply as sine inverse of mu rarer upon mu denser. This is the expression to find critical angle for given pair of optical media. I see sine inverse mu rarer to mu denser. But suppose second medium is air. Light emerges in air. Then mu rarer will be mu of air, and mu of air, you all know refractive index of air medium. It's same as refractive index for vacuum as well as free space, and its value is always 1. So if the second medium is air, then you can rewrite this formula after reducing it. So for glass air medium, water air medium, any medium with respect to air, you can rewrite it as, कैसे लिखोगे आप? IC will be then sin inverse 1 upon refractive index absolute value of denser medium. ये भी एक फॉर्मूला यूज किया जाता है. Every time the second medium might not be air, so you have to concentrate focus on this general formula. But if the second medium is air, then you can directly use this reduced form. Sin inverse of 1 upon refractive index of denser medium is equal to critical angle for that given pair. For example,
I will give you one example. If I have a plastic slab, if I immersed it in oil, ऑयल में ऑयल टैंक है मेरे पास एक, और उसमें एक मैंने प्लास्टिक स्लैब इमर्स करके रखी है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज बोथ मीडिया आर नॉन एयर, so you have to go for this media. And if they ask you to find critical angle for plastic slab oil interface, then you have to use this formula. For example, if I have oil tank, if I place plastic slab immersed in it, it may be of glass, it may be of plastic, any material. Definitely, plastic should be considered denser as compared to oil. So here, oil is a rarer medium. And out of these two, plastic slab, you have to select as a denser medium. Light should move from plastic and then should go in oil. This is the required condition for total internal reflection. Initially, light should move through denser medium and should incident on the interface from denser medium from denser medium at an angle greater than critical angle for the given pair. अभी क्या होता है? Suppose इधर light आता है at this point, so you can find angle of incidence. If this angle of incidence is less than IC, light will go in oil, only not following the same path. It will bend a little away from normal, like this. It happens till angle of incidence is less than IC. But at one particular angle of incidence, the value if exceeds then IC, but this IC should be determined for this given pair. प्लास्टिक ऑयल जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो पेयर के लिए हम लोगों को आईसी फाइंड करनी पड़ेगी, और टिल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन आईसी the ray will move in oil, but if exceeds IC of this pair, then it will get reflected back, internally reflected in the same plastic. If such reflected ray enters your eye, then this point on the surface will shine, will look brilliant. जो एंगल हम लोगों को अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, so that at that position our eye will receive internally reflected ray, then that position, मैं इधर खड़ी रहती तो ये पॉइंट मेरे को शाइनी लगता, अगर मैं इधर खड़ी रहती तो ये रे ये वाला वो ऑयल में जा रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो इधर से हम लोगों को ये पॉइंट शाइनी नहीं दिखेगा. At definite position, you have to adjust your position so that that particular surface or at that particular point will look bright for you. हम लोगों को सब ये एडजस्ट करना पड़ता है. Then and then only it happens. For example, if the numeric is asked, find critical angle for transparent plastic immersed in oil. Refractive index of plastic is given 2.14. Refractive index of oil is given, it is 1.36. That time you have to use this general formula because none of the media is air. इसमें से एयर कौन सी भी नहीं है. तो when you want to find IC for plastic oil pair, in this case, this formula, one sine inverse of 1 upon mu denser should not be used.
ये यूज नहीं करना है, ये हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूटिव वैल्यूज। सो IC विल बी देन साइन इनवर्स, you always remember mu of rarer should be taken up। mu क्या जो रेयर है ना वो हम लोगों को ऊपर लेना है, बिकॉज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकंड मीडियम mu2 by mu1, सेकंड मीडियम इज ऑलवेज रेयर। सो ऑयल के लिए दिया हुआ है इट इज 1.36 एंड प्लास्टिक जो ग्लास दी है इट इज 2.14। If you take the ratio, it comes कितना आएगा बोलो? 13/20। 20 सिलेक्ट करो, सो 0.6 के आजू बाजू आ जाएगा। सो इट विल बी 0.6 समथिंग। देखो ना रफली किया तो 0.6 तक आ जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड एंगल for which its sine value is 0.6। You know all sine 0 is 0, sine 90 is 1. So if angle is gradually increased, its sine ratio goes on increasing। You all know sine 30 is half, sine 0 0, sine 30 half, and if you proceed further sine 90 comes 1। सो ये हाफ से ज्यादा है। सो एंगल ऑफ विच साइन रेशियो इज 0.6 विल बी ग्रेटर देन डेफिनेटली 30 बट लेस देन 90। ऐसा हम लोगों को एंगल साइन इनवर्स से हिसाब से एक बुकलेट मिलता है, उसको बोलते हैं, और इन दैट बुकलेट वी गेट नंबर ऑफ टेबल्स। You can refer that booklet during board exam 11-12 के लिए वो बुकलेट अलाउड है। उसमें क्या है, लॉग टेबल का एक पेज है, एंटी लॉग टेबल, साइन, कोसाइन, टैन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, ऐसे सब टेबल्स आते हैं एंड इट इज अलाउड इन बोर्ड एग्जाम। सो हम लोग वो बुकलेट यूज करके साइन ये एंगल, ऐसा एंगल निकालना है जिसकी साइन रेशियो की वैल्यू 0.6 है, उल्टा ट्रेस करके तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इन दिस केस इफ यू टेक इनवर्स द साइन ऑफ 0.6 comes to be 39 डिग्री एंड सम मिनट्स। आजू बाजू ये केस आता है, 39 के आजू बाजू एंगल मिल जाएगा। You take one more case. Suppose the second medium is air. हम ऐसे assume करते हैं कि second medium air है। For example, find critical angle for water-air interface. Water यानी कि क्या? एक बीकर है। ये पहली केस हुई ना प्लास्टिक वाली। सेकंड केस वाटर एयर में बोल रही हूँ। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। सो फॉर वाटर एयर यानी कि इधर बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप, इधर मेरा आई है, मैं ऊपर से देख रही हूँ। आप कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इधर एक टॉर्च लगाया है, सोर्स ऑफ लाइट। सो व्हाट हैपेंस टिल दिस रे makes angle of incidence while passing through water at the interface less than IC, it will emerge in air। वो एयर में जाएगा ही। लेकिन इफ ये टॉर्च हम लोग इधर रखते हैं, मैंने आई इधर लगाया है ना, तो इधर लगते हैं, बट when this angle becomes greater than IC, then this ray will get internally reflected in water, and if I am at this point, this is my eye, then this point will be shiny for me। internally reflected ray आपके आई में जाना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट will look shiny। कोई जो इधर से देख रहा है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ये प्लेन ही लगेगा, लेकिन ये जो पर्सन है उसको ही विल फील दिस पॉइंट इज शाइनिंग।
इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं. 1 मिनट. 1 मिनट. होल्ड. इसको हम लोग बोलते हैं. सो दिस आर द एप्लीकेशन. सो इफ वाटर एयर पेयर के लिए आईसी की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए वो भी हम लोग निकाल सकते हैं. आईसी विल बी साइन इनवर्स. अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मॉडिफाइड, जो रिड्यूस वाला है. 1 upon refractive index of water because second medium is air. So 1 upon mu of tensor medium. So 1 upon 1.3 कितना आएगा बोलो? 10/13 आएगा. 100/130 ऐसा वो आ जाएगा. So 10/13 will be again 0.13 5 13 6 काउंट करो और ढूंढो कितना आता है. It will come so that angle will be 48 degree. ये जो रेशो है ना उसका वैल्यू ऐसा आएगा कि जिसकी वैल्यू 48 है. सो दिस इज फॉर वाटर. अभी देखो वाटर एयर के लिए आईसी कितना आता है? 48. सिमिलरली यू कैन फाइंड आईसी फॉर ग्लास एयर पेयर लेते हैं तो कैसा आएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास कितना होता है? 1.5. 15 6 90. सो हियर आल्सो यू विल गेट करीबन 0.6666. So when you take sine inverse, it comes nearly 42. 42 आता है. तो glass is more denser with respect to water. What it implies, if refractive index of denser medium you have selected is greater, its value of critical angle is lesser. For example, डायमंड का जिक्र करते हैं. डायमंड में क्या होता है? it is having maximum refractive index of all known material. Refractive index of diamond is 2.4. वो मैक्सिमम वैल्यू है. जितने हम लोगों को सब्सटेंसेस मालूम है ना उनमें से 2.4 इज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज फॉर डायमंड का जिक्र करते हैं. तो इधर कितना आएगा? 2.4 आएगा. सपोज 25 लेते हैं. सो 1/20 विल बी 0.04. सो इट विल बी 0.4. स्टिल एंगल वैल्यू रिड्यूस हो गई है. तो ये एंगल एग्जैक्टली फॉर डायमंड कम्स 24 डिग्री. Critical angle for diamond air pair is 24 degree. So if mu increases for the given denser medium, value of IC decreases, affect हो जाती है. So ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. अभी क्या ये तो एक डेरिवेशन मिल गया. If more denser medium, value of critical angle is comparatively lesser. So I have shown you few examples. The way you solve the examples, I will make the assignment and you have to solve that assignment in the classwork notebook. So now we'll go for diamond. Diamond कैसे रहता है? उसको डिफरेंट फैसेट्स रहते हैं. बराबर है. सो लाइट इज अलाउड टू एंटर थ्रू वन फेस इफ एट दिस पॉइंट रेयर है ना ये डेंसर में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन ऑर्डिनरी विल टेक प्लेस. इट विल एंटर इन डायमंड. सपोज after entering it will collide on any one interface. इसको कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 साइड्स आएंगे. 6 स्पेसेस आएंगे. अंदर से it will incident on one of the faces. सपोज ये फेस के अंदर से वो घुस गया. if at this face
you draw normal. And if angle of incidence I is greater than now 24, 24 से ज्यादा है ये एंगल, तो ये फेस से वो इमर्ज आउट इन एयर नहीं होगा. The facets are made in such a way a light once entering the diamond should suffer multiple internal reflections, and that light will be of then greater intensity, and such light is allowed to emerge out only through few certain faces. जो ताश लगाते हैं ना कारागिर, तो वो लोग ऐसे फैसेट्स लगाते हैं जो कि they living the diamond can live only through few certain phases. And if you rotate it and if you keep our eye over here, before emerging out, for that particular phase, the angle of incidence inside should they make greater than 24, less than 24. So less than 24 हो गया, तो ये अब अभी वापिस अंदर नहीं जाएगा. Through that facet, it will emerge out. And if such ray enters your eye, this facet you feel shining, brilliant. So brilliance of diamond is one of the effects observed due to phenomenon of total internal reflection. वो कारागिर ना इतना तैयारी का चाहिए जिसकी हिसाब से वो डायमंड को ना ब्रिलियंसी दे सके. इट इज अप टू हिम. इसीलिए छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है, ब्रिलियंसी कितनी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड हो जाती है. सो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इफ यू कंसिडर बियर, भालू जो हिमालय में है, आइस में रहता है, उसके जो हेयर्स है ना, और दैट ऑल्सो आर शाइनी इन नेचर. द सेम थिंग. One more application is optical fiber. Optical fiber is used in plenty of fields, in medicine, in telecommunication. सब जगह ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स आर नेवर यूज्ड सिंगुलर, always are used in assembly form. I am moving further to study the construction, working and uses of optical fiber can be explained on the basis of total internal reflection. So मैंने थोड़ा आगे गई हूँ और I am discussing the content on page, बोलती हूँ मैं, 166 part of point 9.6.1. पहले मैंने जो बोला वो बुक में दिया नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिक सॉल्व करके बताई. बुक में एक न्यूमेरिक सॉल्व करके दी है. देखो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का के ऊपर का पैरा देखो, उसमें उन लोगों ने एक सैंपल दिया है. कॉमनली यूज ग्लासेस, उसकी म्यू 1.5 है और उसका आईसी करीबन 42 आता है. वाटर के लिए भी दिया है, लेकिन मैंने वो सॉल्व करके बताया. सो यू विल रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट पेयर. एंड जनरली सेकंड मीडियम, रेयर मीडियम इज मोस्टली एयर. मोस्ट टाइम्स एयर ही रहती है. So based on, you can design different instruments. One of the instruments is optical fiber. It is always used in assembly form. Optical fibers is a bundle of very fine, thin, long strands clamped firmly together after aligning them. एक दूसरे से इकट्ठा करनी है. Each fiber is synthetic composite fiber made up of two materials. Each fiber, उसका हर एक स्ट्रैंड में बोल रही हूँ सिंथेटिक है क्योंकि हम लोग बनाते हैं. One of the hair
Natural hair of bear in Himalaya can be considered as optical fiber. वो नेचुरल हो गया. कॉम्पोजिट के जब भी बनाते हैं वो सिंथेटिक है, कॉम्पोजिट है. One, if you select one strand, it has inner part which is called core. It is made up of fine cords or glass, and it is coated with ऊपर से. There is no gap between core and this outer coating. Outer coating is called cladding. ये क्लैडिंग से कोट हो जाता है, ये क्लैडिंग है. एंड ये अंदर का क्या है, फाइनल पार्ट, इट इज कॉर्ड्स, उसको कोर बोलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज मेड ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एंड लाइट इज परमिटेड ओनली टू पास थ्रू दिस कोर. उसका पाथ कन्फाइन किया जाता है. अभी मैं डायग्राम निकालती हूँ फटाफट से, स्टे ट्यून. ये कोर है, ये ऊपर का क्लैडिंग है. इट इज, आई हैव टेकन इस वर्टिकल सेक्शन. सो क्लैडिंग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीबन 1.7 वगैरह लेते हैं, और इनर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सिलेक्ट 1.7 एंड नियर अबाउट लेस देन 1.5 लेते हैं वो क्लैडिंग के लिए. सो क्या होता है, लाइट एंटर्स इन दिस ऑप्टिकल फाइबर व्हेन इंसिडेंट एट वन ऑफ इट्स एंड. अभी रिफ्रैक्शन होगा, एंड एट दिस पॉइंट इट विल गेट रिफ्रैक्टेड इन द फाइबर. इधर रिफ्रैक्शन होता है. Following laws of refraction, I will be greater than R because light is moving from rarer medium into denser medium. Now it will incident on the opposite face, suppose at point A. It is adjusted such that this angle will be greater than critical angle of core cladding pair. जो मटेरियल हम लोगों ने लिए है कोर और क्लैडिंग बनाने के लिए, उनके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आईसी. एंड दिस लाइट इफ इंसिडेंट एट पॉइंट ए ग्रेटर देन एंगल आईसी फॉर गिवन पेयर, इट विल नॉट एंटर द क्लैडिंग मटेरियल, इंस्टेड इट विल गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड. एट दिस पॉइंट बी अगेन इट विल गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड. You confine the path of ray of light through the core only. So there is no loss of incident energy. Incident energy का loss नहीं होता है. And after suffering multiple total reflections at different points, it emerges out. It is led to emerge out through its another end, where this angle it will be less than IC, and when less than IC it will emerge out through other end. So it suffers multiple total internal reflection along its path, and it is observed intensity of emerged light is nearly same intensity of this incident light. उसमें एनर्जी लॉस कम होता है. सो अभी हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर से जो मेडिसिन में यूज किए होते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं ना, पूरी बॉडी की एंडोस्कोपी बनाते हैं, फॉर दैट दे यूज ऑप्टिकल फाइबर. टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर, एवरीवेयर इन डिफरेंट फील्ड्स दिस ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी यूजफुल. सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड रिफ्रैक्शन. डोंट लीव. I request all not to leave for more 5 minutes. Stay tuned. लीव मत करो, आगे की मीटिंग चालू नहीं होगी, रुको आप लोग जरा. सो रिफ्रैक्शन क्या एक स्पेशल केस है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन. हियर वी स्टडीड व्हेन लाइट सफर्स ओनली सिंगल रिफ्रैक्शन, but light may suffer a series of refraction along its path. Suppose a glass slab
At this space, it enters the glass. Through this space, it leaves the glass. So it is suffering two refractions simultaneously. It may suffer number of refractions. इधर water tank fill किया है, तो ये water tank में जाएगा, water tank से बाहर आएगा. Suppose again here is a glass slab. So when it along its path, it may suffer multiple refractions. But if first medium and last medium are same and all these optical media are parallel to each other, then it is observed emergent ray and incident ray are parallel to each other. Only you get lateral shifting. जो इधर है ना, वो रे इमर्जेंट इधर से बाहर जाता है, laterally gets shifted, but they are parallel to each other. So this is called lateral deviation. So it is the example of refraction of light on two plane surfaces which are parallel to each other. Next time we'll proceed further to study refraction of light more than one time, again at plane surfaces, but when inclined at certain angle between them. So that is called prism, the device having two plane surfaces, refracting one, inclined at certain non-zero angle with respect to each other. ये एक तरीका मैंने बोला. If all media parallel, all media optical, first and last is same, parallel are the incident ray and emergent ray from the last medium. Is that clear? So next time we will proceed further to study multiple refraction at plane surfaces. Suppose only two, for simplicity we select inclined with respect to each other. So I am now closing the meet for all.